Very good morning, all girls. We start with our next topic. Okay, the topic of vectors. अच्छा, students vectors के पहले मेरे हिसाब से 2 sessions के लिए it will be only basic information being shared with you. Okay, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको practically जो मैं बताने जा रहा हूं वो सब कुछ आए, but everyone, no one will forward the video. Okay, everyone should listen to every bit that I say, and whatever I am asking you all to write वो आपको लिखना भी है, ठीक है? बुक में रहना ही चाहिए. Whatever I say, it has to be there in your books as well, right? अच्छा, दूसरी बात, ब्लू बुक आपको वेक्टर्स का नहीं दिया गया है. It has not been given so far. It will be provided to you along with your lecture in PDF form. Okay? जितना हो सके मैं आपको जो लिखना है वो वैसे ही लिखवाने वाला ही हूँ. So you don't bother about that much. Okay? Listen and make a note of. Right? अच्छा, vectors basic introduction and we start. अच्छा, a vector, any vector is a physical quantity that has magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. So you all know a vector is represented by what we say is a directed line segment. Directed line segment. Okay, it's a directed line segment, right? So when I say this is a segment, correct ना? ये AB segment है, and इसको एक डायरेक्शन दे दिया, मतलब it has now become a directed line segment. Directed line segment is a vector, ठीक है? इसको लिखते कैसे हैं? लिखते ऐसे हैं, ए बी बार. ओके, सम बुक्स विल राइट ए बी बार. ओके, ऐसे भी लिखा जाता है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. ईदर वे कैन बी रिटन, या कहीं कहीं पर दे विल यूज ओनली सिंगल लेटर, सिंगल स्मॉल लेटर, आर बार. दिस इज आर बार. आर बार ऑल्सो कैन रिप्रेजेंट दिस वेक्टर, ठीक है? अच्छा, ए बी हो गया, राइट? वेक्टर ए बी हो गया, आर बार हो गया, वेक्टर ए बी बार लिखते ऐसे लिखते हैं. अच्छा, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार. इसको रीड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार, नॉट मॉड्यूलस ए बी बार. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार व्हेन द क्वांटिटी इनसाइड इज. इसको कैसे रीड करते हैं? इसको रीड करते हैं मॉड्यूलस ऑफ -6. ओके, लिखने का तरीका वही है, लेकिन इसको रीड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार. मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज हाउ यू विल रीड इट, नॉट मॉड्यूलस ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार. ओके, sometimes supposing the vector is r bar, okay, vector is r bar, ये vector हो गया, then some books take this as the notation, r represents its magnitude. Okay, r represents its magnitude. Now everyone, ये एक standard notation करके तो है, लेकिन आप जब लिखते हो, आप जब बात करते हो, तभी you say r bar is a vector and r is its magnitude. Then we go ahead. ठीक है? So everyone, whenever you talk about a vector, this one line please remember. Whenever you talk about a vector, okay, you have to talk about its magnitude and talk about its direction. Okay, unless and until you talk about its magnitude and its direction, okay, it is not complete. I hope all of you all understand that absolutely clearly. Okay, so
if I say you walk 5 kilometers, okay, that walking 5 kilometers is not a vector. You walk 5 kilometers in northeast direction, that becomes a vector, because you have given me its magnitude and its direction. तो बन गया वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, whenever you talk about a vector, you have to talk about its magnitude and its direction, then the vector becomes defined. ठीक है, so first thing, physical quantity having magnitude as well as direction, notation and representation. Notation, okay, representation, directed line segment, okay, इसको बोलते हैं magnitude of the vector. Magnitude of the vector, not modulus of the vector. This is modulus of -x, mod of -x, magnitude of AB bar. Okay, sometimes also denoted this way, R bar is the vector, R becomes its magnitude. लेकिन आप जब लिखते हो तभी please mention that R is its magnitude. ठीक है, अच्छा, this first you all note down. Then systematically I am going to take each one into account and talk about it. Okay, तो ये एक बार पॉज करके लिख दो. जो मैंने बात किया है, everything has to be there in the book. Okay, अच्छा, zero vector or null vector. अच्छा, everyone, a vector you all understand has got initial point and terminal point. Okay, we are talking about zero vector, everyone. Zero vector. Okay, zero vector. So you have got initial point, you have got terminal point. So this distance or this length to some scale becomes the magnitude of that vector. Okay, magnitude of that vector. Now when I say zero vector or null vector मतलब क्या? A vector whose magnitude is zero. A vector whose magnitude is zero मतलब क्या? मतलब vector whose magnitude is zero, starting point and ending point. मतलब everyone, मतलब zero vector has to be represented by a point only. So this is obviously clear ना everyone. ये आपके दिमाग में एकदम क्लियरली आना चाहिए. अरे जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड zero and no specific direction. So when I say magnitude zero, immediately all of you all should understand कि भाई starting point and ending point has to become the same. So if it has to become the same, then obvious question in your mind is, अरे मतलब जीरो वेक्टर का पॉइंट है, पॉइंट के बारे में हम लोग कभी से बात कर रहे हैं. So obviously your question in the mind is, अरे जीरो वेक्टर पॉइंट है तो अपन पॉइंट के बारे में वापस की बात कर रहे हैं. अच्छा, everyone, zero vector is the point is absolutely right, and physically it has got no other significance other than that. Zero vector या null vector, okay, all of you all, is a purely mathematical requirement. Okay, this is a mathematical requirement. अभी मैंने ऐसे क्यों बोला है? Okay, physically you all know it's a point. Okay, physically it's a point. Okay, तो ये mathematical requirement क्या है? Supposing all of you all, I give you an example to illustrate this. Okay, आप लोग let us say normal working day, okay, not आजकल के जमाने का नहीं, normal working day, घर से निकले सुबह और क्लास आए,
So B represents the class and AB bar is your displacement. तो AB bar ये हो गया, right? This is your displacement from home to class. Then मान लो from B for some reason let us assume you had to go to college. Okay, so BC bar represents that. And college से hopefully you return back home. Okay, back home मतलब क्या? Okay, I think now you all have to say your displacement is zero. The distance that you have traveled is not zero. Your displacement is zero. Why? Because your initial point and terminal point. Your initial point and terminal point are one and the same. Are one and the same. That's why displacement will be zero. इसलिए इसके लिए इस फिगर के लिए drawn you all will say AB bar plus BC bar plus CA bar is equal to 0. That is how you all will write it. That is how you all will represent it. Okay, AB bar plus BC bar plus CA bar is equal to 0. अच्छा, मान लो ऐसे किसी ने लिख दिया. Okay, so then everyone ये देख के सब लोग को ये समझ में तो आएगा. इसका मतलब क्या है समझ में आ गया. बट ऑल मैथमेटिकली ये रिलेशन जो लिखा है मैंने ये 100% करेक्ट नहीं है. वाई? इक्वल साइन के LHS में इट इज वेक्टर. See, the vector, na vector added will give you vector only. So this is a vector, but equal to के RHS में it is the number 0, it's a scalar. So what you have written is vector equal to scalar, impossible. Vector equal to scalar is impossible. So I understand all of you all, everyone कहीं पर भी इधर भी कभी भी ऐसे कुछ देखा तो आप सब लोग को समझ में तो आएगा. And everyone will probably draw something like this also. So understanding is not a problem. Physically there is nothing else that you have to understand, but mathematically गड़बड़. And that mathematical गड़बड़ को हमने rectify किया है by introducing zero bar. Alright, zero bar. That's how you will read it. And that is null vector or zero vector. Okay. I hope all of you are clear with the concept of zero vector as well. Completely mathematical requirement. Okay, completely mathematical requirement. Please make a note of this as well. It is all about zero vector or null vector. तो याद रखना जब भी आप relation लिखो पूरा. Okay, when you write the entire relation, you all have to make sure that if LHS is a vector quantity, RHS is also vector quantity. ओके, एंड जीरो लिखना है तो जीरो बार होना ही चाहिए. ठीक है, चलो जीरो वेक्टर के बारे में लिख दो. जीरो वेक्टर के बारे में लिख दो. कम ऑन. अच्छा, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मतलब क्या? ओके, यूनिट वेक्टर मतलब क्या? यूनिट वेक्टर मींस वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड. यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड. वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स normally all it is denoted by a cap. a hat भी लिखते हैं कभी कभी. a cap या a hat, and this is given by a bar upon magnitude of a bar itself. Okay, a vector divided by its own magnitude is unit vector. So if I have a vector, let us say a bar, okay, whose magnitude is 50 units. Okay, whose magnitude is 50 units. So unit vector कैसे मिलेगा मेरे को? Okay, this will be a cap. कैसे मिलेगा? You have to compress this vector.
A bar upon magnitude of A bar, that means A bar upon 50, A bar upon 50. Okay, अच्छा, this I am talking unit vector A cap. This is basically all of y'all couple of things that y'all should know. Unit vector along A bar is A bar upon magnitude of A bar. Along A bar. Okay, then unit vector parallel to A bar. Okay, अच्छा, everyone, I think आप लोगों को फिजिक्स में ये बोला गया है कि पैरेलल मतलब आप मानो कि भाई वो सेम डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल बोला तो उल्टा डायरेक्शन। Whereas अपने लिए when we go by the word parallel, okay, we go exactly with the same understanding as what we do in coordinate geometry. Okay, along बोला तो it is like ये A बार वेक्टर है और ये आपका along वाला A कैप है। ओके, पैरेलल टू A बार बोल दिया, पैरेलल टू A बार मतलब ये A बार है एंड ये A कैप बन गया, A कैप। ओके, एंड ये माइनस A कैप बन गया। So when I say parallel to A bar, you all have to write this as plus or minus A bar upon magnitude of A bar. A bar upon magnitude of A bar. मतलब ये A bar वेक्टर हो गया along वाला यूनिट, ये A bar वेक्टर हो गया along and opposite. So these two will be together called parallel to A bar. ठीक है? अच्छा, so यूनिट वेक्टर के बारे में you all understand everything, along, parallel, ठीक है? अच्छा, everyone, supposing I ever ask you all vector of magnitude m along A bar is very important, हाँ? ये आज के बाद फिर मैं वापस आपसे बात नहीं करने वाला है इसके बारे में, हाँ? Vector of magnitude m along A bar. So what will I have to do? I have to talk about ये रहा vector A bar. Okay, vector A bar. So what do I do? Shall I directly multiply A bar by m and say हाँ ये हो गया vector of magnitude m along A bar. No, everyone, what you will have to do is you will have to convert this A bar into A cap. A cap मतलब क्या? A cap मतलब A bar upon magnitude of A bar. ओके, तो ये आपका क्या, आपने क्या किया? बड़ा सा वेक्टर दिया। ओके, बड़ा सा हमको वेक्टर दिया, बड़ा सा वेक्टर में से आपने क्या किया? उस वेक्टर, बड़ा सा वेक्टर को यूनिट वेक्टर किया। ओके, यूनिट वेक्टर किया। यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर करने के बाद आपने क्या किया? अब मान लो आपको मैग्नीट्यूड 10 यूनिट चाहिए, तो इस यूनिट को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो दैट मीन्स दिस विल नाउ बी, okay, this will be m times A cap. So that means it is m times A bar upon magnitude of A bar. M times A bar upon magnitude of A bar. जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। यूनिट वेक्टर along A bar. So draw A bar, draw A cap. Okay, that is A bar upon magnitude of. इसको ही कंप्रेस किया है by its own magnitude, तो A cap आ गया। पैरेलल टू A bar, तो वेक्टर को ही कंप्रेस किया है, यूनिट बना दिया, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन।
and then vector of magnitude m along a bar, along a bar, okay, along a bar बोल दिया, vector उसका यूनिट जो मैंने अभी दिखाया तुम लोग को, उसका यूनिट and then multiply it by the required magnitude. I think that gives you magnitude m along a bar. ठीक है? Please go ahead, note this down completely, everyone.